So hello everyone, I am a final year MBBS student at NRS Medical College, Kolkata. So being in final year, I will be able to tell you about my college at least, and also to some extent about other medical colleges of West Bengal. So 2 years back, I made a video regarding top 10 government medical college of West Bengal, but due to current scenario, I thought एक update की ज़रूरत है, and many of you were texting me that you are confused regarding what to choose in first, second, third or fourth like that. So I thought to give you an updated version of top 10 government medical college of West Bengal in 2024. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कॉलेज का रैंकिंग हमेशा कुछ बातों पे डिपेंड करता है, एंड दोज आर इट्स लोकेशन, then second it's establishment year, third it's patient flow which may help in your internship period, and fourth about the student's preference, what the student chose over the years in their counseling process. Now I would like to add one more thing, that is politics in college. In my opinion, politics is good if it's for the benefit of the student, it's in the interest of the student, but once it leads to like to pressurize someone or to influence someone, I think then that's the most dangerous thing, and it's really unfortunate if it happens anywhere in any colleges. So what we are currently seeing in news channels or in through various sources in social media, it's really unfortunate. And after this this horrific incident in Arjikar, I think some changes will definitely be there in the ranking list, and I will share with you all in the upcoming segment. So let's get started with the top 10 government medical college of West Bengal in 2024. I am a final year MBBS student at NRS, and I spent almost over 4 years in NRS Medical College, and I can say you that according to me, at least according to me, NRS Medical College is the best medical college or the best government medical college in West Bengal, because it is apolitical and there's no political influence as such in the students' body, and also the location is a prime location. Patient flow is such that it will help us in internship also, and beyond that I am a great sports lover, so we have a beautiful playground with floodlight, and overall I can say we have a good senior junior relationship, and definitely I can say it's the best medical college in the West Bengal, at least according to me. But as you all know, Medical College Kolkata, or known by MCK, is definitely a good medical college in West Bengal, and it's known over the years, and it's known throughout India. It's a renowned medical college, so definitely I'll be keeping MCK or Medical College Kolkata as number one, and then I would say NRS Medical College as second choice, and third I can say it probably be IPGMER and SSKM Hospital, or which many of us know by a common name called PG और SSKM हॉस्पिटल. सी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रैंकिंग फिक्स रहे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, स्टूडेंट का प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड इफ़ यू आस्क टू योर सीनियर्स ऑल्सो, सो देयर सजेशंस में ऑल्सो वेरी. सो डेफिनेटली नो कॉलेज इज़ 100% परफेक्ट, एंड यू कंसिडर मेनी फैक्टर्स बिफोर गिविंग योर चॉइसेस. So according to me, the first one will be MCK or Medical College Kolkata, second one will be NRS Medical College and Hospital Kolkata, third will be IPGMER and SSKM Hospital, and fourth, I think previously also I said it would have been Arjikar Medical College, but I think at least for this year and due to current scenario, many will prefer CNMC or Calcutta National Medical College. So one thing I would like to make clear that it's Calcutta National Medical College CNMC and Medical College Kolkata, two different medical college. एक आप लोगों का इंसिडेंट बताता हूँ. मेरा ही बैचमेट है और मेरे ही फ्लोर पे रहता है. सो उसने अपने ऑल इंडिया कोटा से, सो चॉइस फिलिंग में पहला CNMC डाल दिया था. इन वेस्ट बंगाल के लिस्ट में पहला CNMC डाला था, बिकॉज गूगल करके देखा कि नेशनल मेडिकल कॉलेज आया है, सो वो डाल दिया है. बट डेफिनेटली ये वो मेडिकल कॉलेज नहीं है. CNMC इज़ डिफरेंट एंड मेडिकल कॉलेज कोलकाता इज़ डिफरेंट. द फेमस वन विच इज़ नोन थ्रू आउट इंडिया, दैट इज़ मेडिकल कॉलेज कोलकाता MCK, and this one is CNMC, Calcutta National Medical College. So after CNMC, the fifth and sixth, I am confused, because it can be Sagar Datta Medical College and Hospital, or it can be Arjikar Medical College and Hospital. It also depends upon the student. At least for this year, it may vary. Then after the 7th is Bardhaman Medical College, known by BMC. Then 8th, it can be College of Medicine and JNM Hospital, that is in Kalyani. So it's because Kalyani is very close to Kolkata, it's periphery of Kolkata, so I think that is also
preferred medical college among the students. Then after Kalyani, I think Bankura Samilani Medical College is also a renowned medical college in West Bengal. Then after that, I think it will be North Bengal Medical College. So overall the ranking of the colleges may vary, but I have given you a rough idea about the top 10 government medical college, and definitely इसके बाद मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, मालदा मेडिकल कॉलेज और बाकी मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे. एंड एक और मेडिकल कॉलेज है बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो बारासात में लोकेटेड है. एंड ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन इट्स बिकमिंग पॉपुलर नाउ, बट इट्स अ न्यू कॉलेज, बस कुछ साल पहले ही ओपन हुआ है. सो डेफिनेटली इस रैंकिंग लिस्ट में अभी तो शायद मैं फिट ना करूँ, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर इट विल बी अ डिमांडिंग मेडिकल कॉलेज. सो लास्टली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई कॉलेज का रैंकिंग फिक्स नहीं रहता है. इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ स्टडी. एंड कॉलेज बेसिकली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है और जो पेशेंट एस्पेक्ट इन इंटर्नशिप है, इट हेल्प इन दैट वे ओनली कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपका हेल्प करे एंड पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें ही आपका मेनली जो बेनिफिट होता है. बट अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी एसेंशियल इन मेडिकल कॉलेजेस. सो सेल्फ स्टडी बहुत डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर. एंड डेफिनेटली आप अलग अलग सीनियर से पूछेंगे. सो द ओपिनियन में वेरी एंड कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता है. कोई भी मेडिकल कॉलेज कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. तो आई वुड सजेस्ट दैट यू चूज़ योर मेडिकल कॉलेज डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस एंड कंसिडर ऑल द फैक्टर्स, द लोकेशन, द अदर फैक्टर्स एज वेल व्हाट आई हैव सेड इन दिस वीडियो. So all the best for your future journey and for your new journey. एंड ये साल ऑब्वियसली काफ़ी आप लोगों को पता है कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगा इन विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स. सो अगर और भी कोई क्वेरीज रहता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू मे DM इन द Instagram हैंडल मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन लिंक. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.